A very good evening to everyone. I hope everyone enjoyed their weekend and we are again here with our event Break the Silence क्योंकि बात करना जरूरी है। जो हमने इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए इवेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम आपके लिए लाइव वर्कशॉप्स लेके आ रहे हैं बिकॉज बात करने के लिए जरूरी होना ये जरूरी कि क्या मुद्दे हैं, मुद्दे सबको पता है बट उन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या बेस्ट हम आपको दे सकते हैं, उसी के लिए ये सारी वर्कशॉप्स प्लान की गई है जिसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स रखे हैं जो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे है। तो अभी तक के लिए जनरल पब्लिक, बच्चों के बारे में काफी बातें हुई, पेरेंटिंग के बारे में काफी बातें हुई, लेकिन इन सब के दौर में कहीं ना कहीं जो हमारी वीमेंस हैं, महिलाएं जो हैं, वो सबसे ज्यादा एक तरीके से एकदम कॉर्नर में रह जाती है कि ना वो अपनी मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है, वो फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं, अपने मी टाइम पे ध्यान नहीं देती हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। स्पेशली जब कोविड का टाइम आया तो घर पे ही हस्बैंड भी थे, बच्चे भी थे या वो काम भी कर रहे थे, डोमेस्टिक कोर्स भी थे क्योंकि हाउसमेट्स अवेलेबल नहीं थी। तो इन सबको देखते हुए कि किस तरीके से वो अपना मी टाइम रिक्रिएट कर सकें, सेल्फ केयर कर सकें और उसके साथ में अपनी लाइफ में बैलेंस बैठा सके, इसी के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सदाकत रहमान। Ma'am is associate professor and clinical psychologist from Imhan, Srinagar, Jammu and Kashmir. We are so privileged to have you, ma'am, as guest speaker, and I'm sure our audience will get fruitful insight from your end because definitely I'm not saying कि मेल्स नहीं बता सकते बट जो लोग उस रोल में होते हैं और उसके साथ वर्किंग होना, उसके साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, तो आई थिंक वो एक वुमेन ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं एंड दैट्स व्हाई मैम we know you are the best resource person for this session. So please go ahead, ma'am. Okay, let me start. See, like we always, a woman always neglects herself. She never says कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, मुझे कुछ वक्त अपने लिए बिताना है. Always she is busy with family, with husband, with children and everything. So a strong woman accepts both compliments or criticism graciously, knowing that it takes both sun and rain for a flower to grow. Who is a woman? A woman is a wife, a mother, a daughter, a friend, a sister, and a co-worker, a caregiver, and whatever else she chooses to be. There is no woman like another, and each resident in a special and unique way. In today's world, it's very difficult to be a woman, as we are repeatedly judged by the norms of the society. We are constantly told what to wear, how to talk, how to walk. We are taken for granted and thought of as the weaker part of the society. However, as we look around, we are seeing women walk shoulder to shoulder with men in every field of life. Overcoming barriers to self-care, me time. Me time, a balance in life can be difficult, especially for women, but making time and space for ourselves and getting over any residual emotional guilt is critical to our thought well-being and happiness. In the long run, it is better for those around us too. For most of us, the concept of self-care, me time, and balance in life is lost, aimed, coloring, cell phones, hungry kids, impatient bosses, and 24 into 7 news cycles that continuously bombarding us with big things that worry about us. We rank just about everything: work, kids, friends, family, aging parents, overlooming crisis above our fundamental need for things like rest, quiet, exercise, and pleasure. Sometimes always seems more important than our customer to pushing their self-care further and further down because due to the list, we have been socialized to care for others and taught that self-sacrifice is inextricably linked with motherhood and wifedom. We fear being labeled selfish for insisting on monthly messages or lazy for taking a middle nap. Women are hardwired to care about anything that comes within 100 feet of them, but they have to realize that the best caregiver is a healthy caregiver.
Now, there are 12 habits of all happy women. Like if the woman will apply all these things in her life, she will be the happiest woman in the life. They practice self-care. They have a routine. They are open-minded. They keep smiling. They are kind. They express gratitude. They exercise. They have passion. They spend time alone. They are positive. They have accountability. They accept their flaws. So these are the women who will be most happiest women in their life, who will apply all these 12 steps. Now, like doing all the work, like in a full day, who will how can achieve balance in a life? A woman always busy. If we'll find a woman, she starts her morning at 7 and finishes her morning this evening life at 11 or 12, because of she is feeding everybody. She is not having time for herself. So like me time, a word me time, which a woman has forgotten, that's more important that a woman should have. If like she has to take all this me time for herself, that one point is that she should take a break. Take some time off to unwind, relax and recharge. Because doing all these things whenever she is doing, she should have time for herself also. It could be a couple of hours a day or during the weekends. Switch off your laptops and smartphones and engage, read a book, meditate, go for a jog or walk to a loved ones. But like similarly, usually we don't do these things, but it is very important that we should do these things if we want to be a very good, healthy and balanced woman. Embrace a healthy lifestyle. Your health is bound to affect every other aspect of your life. It is important to invest in your physical and mental well-being, eat healthy, get enough sleep, and stay hydrated and work out regularly. Now, like let's think about the woman when she is eating food. Like she never takes care of herself. She prepares so many dishes, so many things, but whenever it comes for her eating, she never takes a proper diet. She usually avoids what she has in her like that life is so full of stress that she has this thing in mind that I have to do this work, I have to do that work. By that way, she is losing her physical health and mental health. Avoid negativity. Adopting a positive mindset and staying away from negative influences, it is essential for inner peace and happiness. Stay away from toxic people as much as possible. Practice gratitude, avoid self-criticism, and do not least one thing every day that makes you happy. So like has to do, she has to relax. She has um, she has to always have a positive mindset. Learn prioritizes. Creating balance isn't about craving in many things as you can in your everyday life. It's about examining what important and what is not important. Like in your day-to-day life, give preference to those works which are important in a daily life. And like those things which you can avoid, you should avoid those things. Pamper yourself. Occasionally spending some time to treat yourself can do wonders for your mood, mental health, and self-esteem. Once in a while, set aside some time just for yourself, schedule a spa, visit marketplaces, or go for shopping, go for fun, or eat at your favorite restaurants. If you want to unwind without making a dent in your this thing account, listen to some music, take a long bubble bath, or just sleep in. That's more important, like whenever you want to be a happy woman. Now, the pieces of wisdom that can change your life. That is, words are powerful. Use them wisely. People come and go, but the right one stays. You are doing enough even if it doesn't feel like it. Failure is when you don't try. Random acts of kindness make every feel better. Life for today, not for tomorrow. So never look back.
there is nothing there for you. Overthinking kills happiness. At last, I would like to conclude today's session by saying these beautiful words and leaving us all to the things and introspect ourselves that it's not selfish to love yourself. Take care of yourself and to make your happiness as a priority, it's necessary. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you for this crisp presentation and definitely a very powerful message कि yes, every woman need to take care of themselves and they need to consider themselves on the priority. चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके पहले खुद के लिए टाइम निकालना सीखें। छोटी छोटी चीजें बहुत सही बताया आपने कि ठीक है, अगर अकाउंट्स भी आपको लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट्स हमारे पावर में नहीं होते, हम नहीं मैनेज करते हैं। अभी भी वो थोड़ा-सा मेल डोमिनेंस रहता है कि पहले फादर के हाथ में, उसके बाद हस्बैंड के हाथ में, फिर बच्चों के हाथ में। और वो शायद हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में बिल्कुल सेम ही है। तो डेफिनिटली जो दूसरे वेज़ आपने बताए कि बिना स्पेंड किए हुए भी वो कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। नाउ आई वुड लाइक टू open the house for the discussion as we are limiting the discussion today and we are more focusing on the one-to-one interaction. So please, I ask every participant to unmute themselves and please speak about what you feel about this thing, how we can increase this me time. We all are females, we always face the same challenges on daily basis. So please, every participants unmute yourself. What do you feel? How we can create me time, or as a girl, as a female, what you do to create your me time? Yeah, able to unmute themselves. Create me time specifically, mane like I typically will take activities and find ways to enjoy them. Mane like washing my face is not really a special activity geared towards women or something, but by you know, making a routine out of it and you know, playing music while doing it, I feel good about washing my face and brushing my hair and you know, stuff like that. So just simple things in the day, if I make them fun, that's how I usually take out me time for myself. Very nice, Shreya. Anyone else? Coming to Radhika. So I connect with music a lot. So for my me time, my relaxation is maybe practicing some music or listening to some music with which I connect. And at that time, I keep other things aside. So my focus is only on that music, which helps me relax. And So, definitely, this is something again not related to accounts, and anyone can spend, but that music should be by your choice, which is yes, more important. Yeah. whichever music one feels connected with. It could be Hindi, English, or some regional, or anything. It could be instrumental also. Whatever helps you calm down or makes your mind peaceful. Yeah, there are lots of music which give you relaxation in suppress your stress. That's more important. Like sometimes you should listen to those music which give you mental peace. That's very important. Music has very good taste for reducing your stress. Yeah, now so I have seen started this thing in past time कि कई बार ऐसा होता था कि हमारी मदर्स या हमारे घर पे फैमिलीज में कि उस टाइम पे वो लोग रेडियो यूज किया करते थे कि वो आफ्टरनून का टाइम होता था while preparing lunch or maybe doing some work, some core works या ग्रुप में काम करते हुए उस टाइम पे एफएम सिर्फ फीमेल्स के लिए चला करता था, अदरवाइज वो मॉर्निंग और इवनिंग डेडिकेटेड होता था न्यूज के आपकी लिए। फरमाइश। हाँ, आपकी फरमाइश, और वो That स्पेशली was सिर्फ the best thing. हाँ That was हाँ the best thing. वो स्पेशली महिलाओं के लिए किया जाता था कि इतने बजे से इतने बजे तक होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। तो दैट इज अगेन जी वन जी। थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं वो टाइम होना चाहिए कि जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर हैं कि हाँ सब ऑफिस चले गए हैं, स्कूल चले गए हैं बच्चे, और अभी के टाइम पे स्पेशली जब सब कुछ उनको घर से मैनेज करना पड़ रहा है तो शायद थोड़ा सा ज्यादा टफ होता जाता है। तो शीना, आई वुड लाइक टू आस्क यू बिकॉज आई नो यू आर मैनेजिंग, शीना इज ऑल्सो फ्रॉम आवर टीम मनसा, शी इज अ मदर ऑल्सो एंड शी इज वर्किंग ऑल्सो। So I would like to ask you, Sheena, how do you manage your me time, especially during this COVID?
So I think I like to talk to a friend or a cousin, every day. I watch a TV show favorite, which is only favorite of mine every day. So I do those things. And sometimes if work gets too much for me, I would just delegate. I tell the kids also कि थोड़ा help करो. चाहे छोटे छोटे काम करे, but थोड़ा help कर लो ताकि मेरे लिए काम थोड़ा कम हो जाए. That's basically what I do. Just catch up with the people I, get along well with. सो ये कैचअप में अच्छा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड बिकॉज कई बार बोला जाता है कि जब भी जहाँ पे भी चार औरतें इकट्ठी होती है सिर्फ बुराइयां करती हैं सो व्हाट डू यू थिंक मैम लाइक गॉसिपिंग व्हाट आई फील हेल्दी गॉसिपिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटल that's हेल्थ very important because by that way you can share. That's healthy gossiping accepted everywhere, and it should be done. And there should be, I think, for the women, there should be a group of 4 or 5 ladies every day. Those sharing type, like they should be best, like intelligent and like knowing everything, how to like cope with the management with the stress and all this. So there should be always a groups, and I think it's very important. या सो ट्रू दैट बिकॉज हाँ मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे हमें चार लोगों के साथ बैठ के बिचिंग करना है बट हाँ एटलीस्ट यू कैन शेयर आप क्या फेस कर रहे हो क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्दी गॉसिपिंग मतलब एक बात को किस तरीके से बात की जाए प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने का उसको डिस्कस करने का तरीका क्या होता है वो डिसाइड करता है कि वो हेल्दी गॉसिपिंग हो रही है या फिर वो बैक बाइटिंग हो रही है तो हेल्दी गॉसिपिंग और बैक बाइटिंग के बीच की लाइन को हमें मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली और हमारे साथ ऑडियंस में कौन है सीमा शर्मा मैम आप चाहेंगे कुछ बताना प्लीज सीमा एंड साइमा बानू दिस सेशन इज ओपन फॉर ऑल नाउ प्लीज आप क्या करते हैं अपने मी टाइम के लिए आप कैसे अपनी सेल्फ केयर करते हैं आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं or anyone who is associated with us for the live session as a participant they can ask दिव्या सुनते तो हम हर बार हैं एक बार बात करके देखते हैं श्वेता तुमने कभी अपनी ऐसे देखा है कि लेडी जब पूरे ग्रुप में बैठी होती है यूजुअली दे विल नॉट स्पीक समथिंग गुड वो हमेशा डिप्रेसिव बातें करते रहते हैं मुझे इसमें दर्द रहता है इसमें and by that way what they are creating more problems for themselves because there is no healthy session going on that way. Because always whenever you are in a group and discussing something you should never discuss your like problems. You should discuss something good, which is like for everybody, that is faithful to everybody. That's very important. So usually what we have seen the ladies, they never talk good. They always speak bad. That's not good session. Yeah, they always come with complaints, come with the discomfort कि ये हुआ था फिर मैंने ऐसे मैनेज किया था तो I know challenges are there are so many challenges but हाँ अप्रोच को थोड़ा बहुत चेंज करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है to the next point which is the balance in life so again I would like to ask anyone how do you like what do you understand by balance in life because balance in life is different to everyone किसी के लिए शायद पूरे टाइम काम करते रहना बैलेंस इन लाइफ है किसी के लिए एक प्रॉपर डे ब्रेक होना बैलेंस इन लाइफ है या किसी के लिए चीजें ऑर्गेनाइज वे में करना या एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए करना वो बैलेंस इन लाइफ है सबके लिए उसके मायने अलग अलग है तो स्टार्टिंग अगेन विद श्रेया what you consider balance in life yes Shreya I think good balance in life is not something that you can like decide beforehand. It is like karke dekh ke trial and error basis per whatever makes you feel like you're not overloaded but also makes you feel like you're doing something of value, doing something productive. वो middle point पहुंच कर try करके और देख के like what is the right middle point. That's how you find your balance. It's really a very subjective question. yeah it is very subjective that's true and definitely like it actually balance in life means different to every age
लेवल कि सबकी एज ग्रुप अलग अलग है, मेरे लिए कुछ और होगा, तुम्हारे लिए कुछ और होगा, शायद मुझसे ओल्डर एज में कुछ और होगा, मेरे खुद के लिए भी। तो वो हर एस्पेक्ट के साथ पे हर स्टेज पे हमारी लाइफ में बैलेंस इन लाइफ चेंज होता रहता है। दिस इज वन थिंग जो आप एक बार डिसाइड नहीं कर सकते हो, आप एक बार फिक्स नहीं कर सकते हो। सो एम आई राइट शीना, आपके लिए बैलेंस इन लाइफ क्या है? So for me, it's, while I do my work, I should also take out some time for myself. So I try to go for a walk every day, and once a week I try and do some meditation to relax. So I still haven't achieved my complete balance the way I would like it, but for me, it is still, trying to get there, trying to achieve that. Kabhi nahi bhi hota, but mostly I try and do it. Okay, I so do this it is one thing which once a week, yeah, properly. which gives you that balance in life feeling. Yeah, Yeah. so coming to the Radhika, again this different age group. So what you have like, what do you consider balance in life? Ma'am, like as you said, it depends on. It depends, and also how I prioritize certain things. That's where I can find a balance. जहाँ पे एक प्रायोरिटाइज मतलब उस दिन के लिए जो मुझे प्रायोरिटाइज करना है, तो समवेयर दैट हेल्प्स मी गेट दैट बैलेंस कि ठीक है आज मुझे जैसे पढ़ाई और काम बैलेंस करना है, सो विच आई विल प्रायोरिटाइज फर्स्ट. That will help me to bring my balance and also give like equal weightage to both the things that are required. Yeah, ma'am. Yeah. Am I audible? Yeah, you are audible. Please go ahead. Shweta, ma'am, I'm continuously following your all programs. Earlier was also nice episodes, and this series also too good. And your speakers, Rahman ma'am, I welcome to ma'am from Jammu and Kashmir. You are I think, representing your Kashmir right now. We are happy to see you here. And ma'am, you asked me earlier also one question, I think, regarding how we balance and how we, regarding the gossiping and all. As per my personal experience, I'm a clinical psychologist in Subharti Medical College in Meerut. My personal experience in balancing, I always feel if I'm emotionally balanced, then I am good enough to do my work. कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली बैलेंस नहीं हूँ तो शायद मुझे डिस्टरबेंस फील होता है. अदरवाइज मेरे लिए हमेशा बैलेंसिंग का मीनिंग है कि मेरी भावनाएं मेरी हमेशा मतलब स्टेबल रहे, फीलिंग्स मेरी जो है वो स्टेबल रहे. और वो शायद मुझे लगता है हर फीमेल या मेल या बच्चे सभी को एक हम मेंटल लेवल को हम तभी शायद बेटर रख सकते हैं जब हम इमोशनली बैलेंस हैं. हम हमेशा बैलेंस की मतलब जैसे अभी उन्होंने बोला मेरे से जो पहले बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव है, बट स्टिल आई फील कि किसी के लिए फिजिकल बैलेंसिंग हो सकता है, किसी के लिए शायद फैमिली में सबका केयर करना बैलेंसिंग हो सकता है, किसी के लिए करियर में बैलेंसिंग हो सकता है. बट माई प्रायोरिटी ऑलवेज ओनली फॉर द इमोशंस. If we are good enough to balance our emotions, then we can do each and everything in our life. हम अपनी फैमिली को, वर्क प्लेस को, या अपनी सोसाइटी को, या कम्युनिटी को, इवन अपनी कंट्री को फिर हम बेटर सर्व कर सकते हैं. और बैलेंसिंग के लिए सबके लिए डिफरेंट व्यू हो सकते हैं. बट जैसे कि मुझे थोड़ा लगता है कि हम थोड़ा नहीं कुछ अच्छा लग रहा है तो हम एकांत में 5 मिनट 10 मिनट जाकर बैठ सकते हैं. कोई अच्छा म्यूजिक जो हम बात कर रहे थे सुन सकते हैं, या फिर हम कोई एक अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं. इवन अभी YouTube पे जैसे आपका प्रोग्राम या बाकी सबके आ रहे हैं, किसी अच्छे एक्सपर्ट का कोई 10 मिनट 5 मिनट कोई अच्छा प्रोग्राम हम बड़े प्रोफेशनल होने के बाद भी सुन सकते हैं. शायद वो हमें कोई हेल्प कर सकता है बैलेंसिंग करने में. तो दिस इज माय ऑल ओवर व्यू. आई थिंक आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू ऑल एक्सपर्ट्स. Yeah, you said it right. Thank you so much for giving me this opportunity, Shweta ma'am. And you are definitely मतलब we always want कि सारे participants सिर्फ participants ना रहें, जितना actively participate करें basically, वो हमारे लिए एक successful session है, because we are doing for all of you. ये सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि बस स्पीकर है और हम हैं और वहीं पे वो सेशन खत्म हो जाए. तो we definitely want कि आपकी तरफ से भी आउटपुट्स आए.
Okay, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you, Seema ji. Okay, so concluding this session, so definitely we all females shared our views, but we have only one male speaker right now. We have Dr. G.K. Buju. So, sir, we would like to know from your perspective how we should manage like our self care or our me time, or how we can improve our balance in life. सर बिकॉज आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है और डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है इसलिए You see, हाँ in Indian culture, in the Vedic, there's a saying, where women are adored, there the gods dwell. औरत की यहाँ इज्जत होती है, वहीं भगवान या देवता रहते हैं. The woman in Indian culture, woman has the highest place in society. But unfortunately, she is being treated very badly in any sexual society. Not only India, everywhere. She has and for that matter, cultural variations are there, which are binding her to some down place. Do not give her proper recognition. And whereas as they put already, a woman is a mother, a sister, a daughter, and she is a world creator rather, and she should get the highest position. But unfortunately, to some extent, a woman is herself responsible also for this type of, I'm going to say, status or position in society. So it is changing, but she is also responsible. Take for the one, I have observed myself, a well-placed women who are well doing good jobs. They always, most of the time, they depend upon their husband. Kya kare? Should I do this thing? Should I not do this thing? Seeking the permission from the husband. Now, I don't mean you should not seek that permission, but there is sort of the independence is missing. During my post-graduation, we had an argument long back in the 60s, we had an argument about the same thing, that women are not treated well. So we had a small survey in our Delhi University. I was a student there, MA Psychology that time. And just after some break, we made, when this topic was forgotten, I issued a start of circular for my class. What type of husband would you like to have? And the questions were well-earning, handsome, well-placed, tall, all those things, giving all the positive points to the husband. So I put them, this is the position now. You are yourself saying that give us all these things, we are better in the husband than in me. So why have you placed yourself? It's a revelation within my own class fellows that yes, we have placed ourselves down by asking something higher for our husbands and then for ourselves. Then cultural violations are there. You see, in our society today in India, you see how women are being treated. And then how their cases are being handled even in courts or in police cases. And unfortunately, recently, you are seeing so many of these rape cases and all those things. And a woman has to stand by herself and fight for her rights in any society, any culture. Why should she be dominated by the husband or by a male partner? She is equal partner in society and she has equal right, but she has to stand by herself. She has to be self-reliant, self-sufficient, and especially when we're now education, all those things are there. And in fact, in Kashmir, I tell you one thing, it was in long 1920s, it's almost 100 years back, when some of our seniors, they thought that we want to bring some change in Kashmir society, because Kashmir society at that time was very much downtrodden and ignorant and all those. So what they did, कि उन्होंने एक सवालिया छोड़ दिया वहां पर, हमें करना क्या चाहिए? तो answer came from कि we must educate women. This is 1920-25 की बात मैं कह रहा हूँ आपसे कश्मीर से, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, मेरे सीनियर थे, उन्हें कैसे करें, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में बड़ा सुलात आ गया था women से, women being proud, and they started already. We start some education institutions. So they started school as sort of trust, which is still surviving there, Women's Welfare Trust. उन्होंने कहा हम स्कूल के लिए लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगे. Very good. And now the cost, basically it was essential for Muslim community because they would not send their girls to schools because of culture by निकाल. हिंदू तो थोड़े पढ़ते थे, लेकिन मुस्लिम नहीं जाते, वो मकतबे में जाके कुरान पढ़ते थे, किसी से वाकई नहीं. It was very difficult to get students from schools.
तो उन्होंने जो 4-5 जने 7 जने जमा हो गए, तो उन्होंने अपने बच्चों को ही पहले लाया, वहां से 5 लड़कियों से स्कूल शुरू कर दिया विद 5 गर्ल्स, और उनको लाना भी उनको ही था, जो शाम को घर भी उनको ही छोड़ना पड़ता था, एंड दे वर ओन्ड एंड इंस्टेड दे वर ऑल कश्मीरी पंडित गर्ल्स। सो जो मकसद उसका था कि कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी में कर दें, वो पूरा नहीं हुआ। तो ग्रेजुअली दे कॉन्टेक्ट मकतबा मदरसे में एक मौलवी साहब कुरान पढ़ाते थे वगैरह, उसको कांटेक्ट कर लिया, भाई हम आपके बच्चों को अंग्रेजी और साइंस पढ़ा देंगे। उन्होंने नहीं कुछ नहीं करना है, मेरे को मार देंगे, औरतों को तालीम नहीं देनी है। नो, दिस इज समथिंग और बोलने को कोई बात है, हमारा टीचर ही यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पढ़ाने के लिए घर में। सो दे सेंट द टीचर टू होम टू दिस मकतबा, उनको उन्होंने अंग्रेजी थोड़ा पढ़ाया, साइंस थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया, till this now got a हाँ जी ठीक पूछा, अच्छा, so some people that way they were able to get a good number of maktabas associated with the trust, और उनको मिडिल स्कूल में उनका नाम भी दे दिया, मुस्लिम स्कूल, हमदानिया स्कूल, वो स्कूल, ये स्कूल, so that Muslim girls could come. And then the first batch of the matriculate girls from Kashmir came out in 1939 at that time from Lahore University of Pakistan. 13 girls, 13 लड़कियां उस आई, पहली बैच जो कश्मीर का matriculate. This was that emancipation of women which was taken there. Women trust आज भी कश्मीर में चल रहा है, इस वक्त वो 200 को चला रहे हैं, and I am presently the chairman of the trust which is running it there, 2 high school, 3 high school, girls high schools. So this was the aim कि उस वक्त उन्हें ये उस वक्त भी यही था कि औरतों को अपनी पोजीशन नहीं मिल रही है, एंड हाउ कैन यू बिल्ड सोसाइटी इट्स, क्योंकि अगर एक औरत को आप एजुकेट करेंगे तो एक फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं, दिस इज अ कांसेप्ट। सो यू एजुकेट अ वुमन एंड ओवर एजुकेशन भी इस्लामिक कल्चर में, मुस्लिम कल्चर में थोड़ा सा प्रश्न अभी है कि औरतें उससे खूब तरह नहीं देखा। देयर आर टाइम से बिफोर 90 तो इनिशियल खत्म हो चुके थे, सिनेमा हॉल में चल रहे थे, लड़कियां घूमती थी ठीक तरह से, देयर समथिंग ऑफ दिस, बट आफ्टर दिस रेडिकलाइजेशन देयर अगेन बीइंग सप्रेस्ड देयर। सदाकत विल बेयर मी आउट अबाउट दिस कि दे कैन मूव आउट लाइक दैट कि ये अब वो कल्चरल है जी, वो है ये बुर्का। सो दैट टाइप ऑफ कल्चरल सप्रेशन is there in some societies, यहाँ पर बाहर भी है, ट्राइबल सोसाइटीज में है, you know it better in most societies में, बाहर में, आदर झारखंड वारखंड में, women cannot move out so freely, और इन नॉर्थ में भी गोंगल रखना है, जब कोई घर में है वैसे रखना है। so all this inhibition जो है, suppression सिर्फ वुमन पर ही है, and naturally a woman has to come out। और अब बहुत उसमें से आप चेंज आ गई है, एजुकेशन की वजह से भी, टेलीविजन की वजह से, सिनेमा की वजह से, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट इन सम सोसाइटीज एज कश्मीर में आजकल अभी भी थोड़ा सा फिर, या आप मिलिटेंसी के बाद फिर वो सप्रेशन आ गया, and in Kashmir they have to come out of this suppression again to be one with modern world। हालांकि एजुकेशन डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी, सब कुछ हैं, but socially they have to come out of, move with at par with men, so that their position is ready here। So woman has to play herself a very good important role, of course, जो घर में उनके बड़े हैं, बाप है, भाई है, husband है, they have to play an important role, because women is an equal shareholder in every part of life। It may be male dominated so far, but it's not, it can't be any dominated. Both are equal partners in any set of society, and both have to work together. And for that matter, woman has to definitely take a leading role, because she has been suppressed so far. She has been exploited so far. और जो आजकल भी हो रहा है. And even today you find they had to give us 33% reservation assemblies, parliament. What is the request for this? Be equal. Oh, so again, it depends upon the man how they did. Who is to go to 33% reservation? Obviously, they are asking from legally, and because men are taking it. So they have to fight, they have to come out, and I'm definitely that जो भी emancipatory section societies के हैं, those male members who are interested in emancipation progress society, they will come out openly and support them in all their aspects. That's all I can say about this topic, because basically it is women and they should fight for their rights. Or the support will say, I think they will get it properly. Thank you. Thank you, sir. May I interfere a little bit? Yes, ma'am, please go ahead. Yeah, let me tell you one thing. As sir said there are like suppression of women in Kashmir or something like that. No, it's not like that. We have so many girls
best girls, like recently IAS result came out. The topper first position holder was a Kashmiri girl. Yeah, I didn't say And- that. I No, said sir, just listen to me first. yes, And yes, like, I know that. whatever the conditions have been in since 90s in Kashmir, but it has not affected the girls' education. Let me be very frank, because Alhamdulillah, this time Kashmir is on the top priority that women are having education. Like, see how many doctors we have. A principal this time, she's a lady. We have a divisional commissioners, they are ladies. We have a office IAS officers, they are ladies. I can say, like, I can oppose this thing to you, sir, Miju sir. I should not, but the male No, folk you are are correct. going back, but the ladies are coming out. You did probably get me. I didn't mean they are not there. I said they are probably well. They are gone even ahead of men. I said they are gone even ahead of men. Yes, sir. So much. I agree Like, with you. I appreciate that. like, sir, everything is fine with the women. But I didn't, unfortunately, because of culture, these things Sir, are culture, see, the Kashmiri culture has been always, sir, as you know, you are a Kashmiri. Kashmiri culture has been always slightly different than the Western culture. That's what I'm telling you, because of that they sir. have to. We cannot deny that, sir. But like, every culture has its own pros and cons, bad or better. But Alhamdulillah, Kashmir also has a very good progress in education. These are relative. These are relative. Yes, sir, I'm telling you. Throughout world, there are some, say, variations are there. In Yes, other sir. parts of India And also like, if we consider the IQ of a Kashmiri girls, that is more on the top of the level. I know it. You can find everywhere that like Kashmiris are leading. Yes. Find out. See, in states, you can find the best doctor is from Kashmir. You can find the best. I agree with you. And we cannot deny that. Yes. I said, sir, we cannot deny that the Kashmiri girls are progressing like anything. No. But ma'am, sir was trying to saying, he is not saying about the current condition. Definitely changes are there, but he was saying कि पहले start कहाँ से हुआ? 1920s में तो कहाँ से? And that is even, this is not the scenario only with Kashmir. This is the same scenario almost with every state. Almost with every state. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's everywhere. And in 1920s, where from they were not even knowing the ABC of anything. So like that way they started. Now it is on the peak. Yes, that is what said. The mushroom growth of education, the top of education is going at top. Yes, sir. Education is at top in Kashmir. But the matter is here, यहाँ पे अगर एजुकेशन की अकेले बात की जाए, लेकिन एजुकेशन होने के बाद में भी क्या वो बैलेंस इन लाइफ या क्या वो फ्रीडम हमें है अभी भी? मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी है। वो लेडीज को कहीं नहीं है। देखिए, लाइक आपके हस्बैंड है, आप डिपेंडेंट रहती है उस पे। Let me tell you frankly, if you are dependent on your husband, मुझे खुद ही बोलिए, सर कितना बीवी को ये देते हैं, मतलब आजादी के वो वहाँ जाए यहाँ जाए। Don't tell me this is a cultural barrier. No. Radhika ji, you didn't get my point. Radhika, you didn't get my point. You didn't get my point. I said firstly that Indian culture, में woman has the highest place. Yes, sir. She has the highest place. And then I say that woman has to find her place because she has been suppressed in different sexual society, different cultures में, different times में. जो आजकल भी चल रहा है, you find these rapes and all those things happening, unfortunately, because of it. So woman has to come out and fight for herself. All these things because she's not finding herself safe, and then she doesn't get safe opportunities also. अभी मैंने आपको ये कहते हैं कि a woman is still fighting the reservation दे दो. Why should fight for the reservation? She should have equal right. एक simple सी example दूंगी. If a woman is driving a car, right? तो male member कोई देख रहा है कि एक lady drive कर रही, he just wants to overtake. Why? Because ego एक word है जो में ज़्यादा है. You are supporting my point. I'm telling you same thing. वही मैं कह रही हूँ कि मतलब नहीं सर, मैं तो वो बोल रही हूँ आपसे कि like always a male has an ego. वो नहीं होना चाहिए because there is equal in the society. We should be all equal. हमारा जो ये me time है वो बहुत अच्छा रहेगा. शाम को आजकल शाम को दोनों वर्किंग होते हैं. शाम को वो लेडी भी आती है वर्क करके, मेल भी आता है वर्क करके. मुझे ये बताइए खुदा के वास्ते, कहाँ हमें ये वो प्रायोरिटी मिलती है? मेल को तो चाय का कप आगे होना चाहिए.
सामने होना चाहिए। बेचारी वो कहाँ जाएगी? वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं वही नहीं कह सर, रहा हूँ मैं आपसे, मुझे मैं उसके लिए समझी, वर्क करना है। वो कहाँ सर, मुझे बताइए कहाँ होता है ये यहाँ सब? पे कहीं ना कहीं हमें कंपेनियनशिप की डेफिनेशन हम लोग जो अपने बच्चों को सिखाते चेंज हैं करनी आगे, चाहिए, वो हमें चेंज करना जरूरी। चेंज करनी कंपेनियनशिप चाहिए का मतलब यहाँ पे हस्बैंड से परमिशन लेना या पार्टनर से परमिशन लेना, इट शुड नॉट बी परमिशन काइंड ऑफ थिंग, इट शुड बी अ No, डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग, discussion. कि मैं ये That's what I करना said. चाहती हूँ, तो And हम ये Shweta, डिस्कस when हैं। it हाँ comes to the discussion, there is always a fight. हाँ, No तो permission इसलिए is not हमें, given. हाँ, हमें कंपेनियनशिप की डेफिनेशन कहीं ना कहीं अपनी पूरी सोसाइटी में चेंज करना इम्पोर्टेंट है, कि ये नहीं कि सिर्फ आपका ये रोल है। और वो अगर हमें भी बेसिकली इवन बीइंग अ वुमन, इट इज इम्पोर्टेंट कि कल्चर के साथ में आप मॉडर्निटी को भी लेके जाइए, आप कल्चर को भी लेके जाइए, एजुकेशन को भी लेके जाइए। उन तीनों का जब ब्लेंड बनाया जाएगा, आई थिंक तब हम शायद अपने बिल्कुल राइट पाथ पे होंगे। बहुत बिकॉज या तो बिल्कुल ही हम, ऐसा होता है कई बार वो फेमिनिज्म की डेफिनेशन आ जाती है कि यू आर बिकमिंग फेमिनिज्म, या आप Yeah. बिल्कुल डाउन हो जाते हो। बट बेसिकली हमें उन दोनों के बीच में मिलके खड़ा होना इम्पोर्टेंट है, अपना तब जाके वो एक्चुअल इक्वालिटी आए। एक सेकंड, ये a woman has equal status in society. She's not different. She's equal society, I mean status. And हाँ। unfortunately, it's being denied to her. By whom? By whom? By the male partner, or even father matter by a female partner in their own house. सास को बहू की लड़ाइयां चलती रहती हैं, ननद और भाभी क्यों चलती रहती हैं? That their man is not involved, the woman is involved. जब एक सास उसको तंग करती है, ननद तंग करती है, कुछ ऐसा होता है, Right. so a woman has to fight her place, Okay. even among women people also, not only males also. Yes, sir, you're right. You are right. We are always with the women to work for them, but they have to come forward and fight for their discrimination. Yeah, I agree with this point. I agree with this point. ये होता है, ये होता है। आपने सीरियल देखते हैं, आप टीवी सीरियल कहीं देख रहे हैं, वहां कुछ ना कुछ दिखाते हैं, वुमन इज सप्रेसिंग अ वुमन, सास भी बहू को बहुत तंग करती है, कुछ ऐसा ही होता है। And I condemn that type of scenes की जहां ऐसे दिखाते हैं. What should they see? Show these things then. We have to rise against those types of what we will be suppressed. हर जगह वही दिखाते को दबा के रख देते हैं, और and woman is exploiter, woman उसको तंग करती है. तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी आ रही है, कि व्हेन अगर मुझे कुछ नहीं मिला है और अगर आगे किसी को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आता है और वो ही हमारे बिहेवियर में रिट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल साइकोलॉजी काम करती है। एंड यू आर वेरी राइट, जितना ज्यादा मेल्स डोमिनेट नहीं करते, उतना ज्यादा फीमेल ही फीमेल को डोमिनेट करते। एक सेकंड, आपके घर में बच्चे हैं, एक सेकंड, बच्चे हैं, लड़का भी लड़की भी है, इवन टुडे लड़की को कहते हो डोंट डू इट, बच्चे को कुछ नहीं कहते हो, यूं टुडे। आज के जमाने में भी लड़की को थोड़ी फ्रीडम है आजकल। गर्ल, द मोमेंट गर्ल टच समथिंग, ये तो लड़की है, तुम्हें कहना नहीं चाहिए था, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें व्हाई? So you give her steps from the very beginning. I say you have to fight against that very thing. Treat them both equally. Both are human beings. Treat everybody as a human being. But the moment you take concept as a human being, you have a different concept, perception बदल जाता है आदमी का. That's my point. हमको बचपन से ही यही सिखाते हैं ना, जब हम बचपन में लड़कियां होती हैं, हमें किचन सेट देते हैं खेलने के लिए, लड़कों को बैट और बॉल देते हैं, जाओ जी बाहर जाओ खेलने के लिए। सर बेसिकली रीजन क्या है? We have never learned to say no. That's what I'm telling you. अब कौन कहेगा? We have to start. कोई आपको कहना है ना, और अपने घर से शुरू करना है। बच्चे आपके बराबर हो। For being doing this much work to do all these things, she is doing these lectures what for? So that the woman should come out and discuss everything. Yeah, that's the point. That's the point, because even कई बार, मतलब जैसे मैंने पर्सनल लाइफ में जो फील किया, मतलब I would like to share, because my father is like, we are 2 sisters and then 1 younger brother. Definitely a proper Hindu family, that typical family की मेल होना चाहिए, मेल चाइल्ड होना चाहिए. But my father always consider, because कि मेरी लड़कियां आगे होना चाहिए, तो I was a kind of कि बोल्ड थी, ड्राइव करती थी शुरू से, और बात करने में कभी डर नहीं लगता था। लड़के ज्यादा फ्रेंड्स होते थे, मेरी थोड़ा कंपेनियनशिप ज्यादा रहती थी, तो वो हमेशा ना उसके साथ में ये आता था कि इसका कैरेक्टर खराब है। ये मैंने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में सुना है, क्यों? क्योंकि मैं जाके ओपनली किसी से भी बात कर पा रही हूँ, किसी भी टॉपिक पे बात कर पा रही हूँ, तो मुझे खुद को भी ये फेस करना पड़ा। बट वहां पे 2 चॉइसेस आपके पास होती है, या तो आप वो स्टिग्मा लेके बैठ जाओ कि हाँ मेरे बारे में कहा जा रहा है तो मुझे चुप हो
जाना चाहिए। हाँ डेफिनेटली मेरी मदर ने भी मुझे कई बार बोला कि तुम लड़की हो, इतना मत बोला करो, हर बात पे मत बोला करो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, ये सारी चीजें होती हैं। बट दैट वाज माय चॉइस कि बीइंग अ पर्सन, मैं ये चीजें अगर जो गलत है मैं गलत को गलत ही बोलूंगी और सही को सही ही बोलूंगी। तो यहाँ पे सिर्फ वुमेन और मैन वाली बात नहीं है, इट इज अबाउट योर इंडिविजुअलिटी। जो आपको ठीक लगता है, आपके मॉरल्स आपको खुद ही चूज करना इंपॉर्टेंट है, और आप खुद ही अपना स्टैंड ले सकते हो, कोई और आपका स्टैंड कभी भी नहीं लेगा। वी कैन सपोर्ट, वी कैन एजुकेट, वी कैन मोटिवेट, बट अल्टीमेटली स्टैंड लेनी बात आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वो कोई और कर नहीं पाएगा। But the male should support. Yes, हाँ मेन शुड सपोर्ट, हाँ मेन शुड सपोर्ट डेफिनेटली। मैंने पहले ही कह दिया, मैंने अपने घर में क्या करते होंगे वो सर आप बताइए। शाम को चाय पिलाते हैं ना मैम को? सर आप शाम को चाय पिलाते हैं मैम को? इंडियन कल्चर में यही है कि वुमेन का हाईएस्ट प्लेस। चाय तो सामने आती है। अच्छा सर, But sir, thank you for sharing your perspective. Basically, that is much more important. Odd man is out. I mean, the odd man is out. और हमारी No, तरफ से no, sir, no, sir. चाय बनाना See, Odd man is out, huh? no, sir, why you are feeling odd? Huh? You should be among the women. Why you feel feeling odd? Wow. Yeah, say you have to go to the doctor. Incidentally, let me tell you one thing. कहाँ शिविता जी कहाँ है? अच्छा हाँ जी सर। हाँ, जब हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया ना, हाँ हाँ, it was in 58 or so. हाँ There were only 12 seats in the university. There were दो कॉलेज साइकोलॉजी पढ़ाते थे उन दिनों, एक था आईपी कॉलेज, दूसरा दिल्ली कॉलेज। वो आईपी कॉलेज was girls college, so I got admission there. I got admission Delhi college. That was both. So there were only 12 seats. There were 11 girls. I was the only boy. I was the only boy. So you can understand my push. I'm a girl for 2 years. हाँ डेफिनेटली सर, फिर तो बिल्कुल। और इवन हमने ये आपको भी देखा है कई बार। हाँ A lighter mood. A lighter mood. Now my name was Gopi Kishan. हाँ My name is Gopi Kishan basically. जी मुझे Gopi Kishan. हाँ We had a lady lecturer from IP college. हाँ This is Sherjang शायद. So when I entered the class, so I saw the permission. May I come in, madam? Yes, बैठ जाओ. आप sat there. She took the attendance वगैरह कुछ सीट नहीं आई थी भी ऑफिस से कौन-कौन है क्या-क्या है. She took. And when she asked me name, I gave the name Gopi Kishan. She was slightly surprised. Anyway, then after some time, couple of months, I'm sitting over, कुछ बैठे थे वहां पर, तो उसने मेरे को बोल दिया, आपको पता है क्या हो गया था? मैंने क्या? जब आप आ गए थे, आपने मेरा नाम बता दिया गोपी किशन, I got angry with you. मैंने कहा क्यों? कहता I thought कि हम सब लेडीज हैं, मैं भी लेडी हूँ, you are the only male, तो आपने कहते मैं गोपी भाई किशन आ गया हूँ. That was very nice incident in my life. Thank God. All these things. So therefore I had, I must say, I've got privilege of working with women. उस वक्त में women college school से associated हूँ in कश्मीर में. सदाका जी जान सकते हैं, वसंता स्कूल है, कश्यप स्कूल है, वहाँ पर 2 स्कूल हैं, schools. I'm the chairman of the trust. So I am greatly assured women, and I am working for the emancipation. Wherever possible, the women, especially we know in the societies में जो कुछ है, I'm a Kashmiri myself, I know what is happening, what has happened there, all these things. And in the militancy, it's the present the woman who was sufferer in Kashmir. Let me tell you this thing. In any respect, she's the worst sufferer. So we have all this say, sympathies for the women, and we want to do everything possible for the women. उसमें भी अगर आपको हमारे सोसाइटी से, ट्रस्ट से, स्कूल से कुछ और भी हेल्प की जरूरत होगी उधर कश्मीर के लिए, we are ready. I am there for that. Thank you very much. God bless you all. Thank you, very great, sir. That's very great. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for sharing your inputs and for this. Like आज जो discussion हुआ वो बहुत important था. Session के साथ में discussion होना ज़्यादा important था. Definitely बात ज़्यादा हुई है आज के session में. So we are very thankful to both of you. So for joining us, and we are thankful to all the participants. Be connected for our next session. We will update you in some time.